am Banushan. Today our topic of discussion is that of the action of the natural selections leading to that of the convergence, radiations, regressions and extensions. What is a convergent evolution? Convergent evolution is a process by which unrelated or distantly related organisms evolve similar body forms, colorations, or organs and adaptations. This is known as convergent evolutions. Next is that of the nature selections can result into the in evolutionary convergence. First is that of the natural selections can result into the evolutionary convergence under the different circumstances. Species can converge in sympathy as mimicry complexes among the insects, especially butterfly, corals, snakes, and their mimics constitutes and others well-known examples. Mimic evolves after one species and the model becomes a posmatics warmly colored because it's a toxic or poisonous is because therefore it is protected. यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो ममिक्री होती है हमारे पास, मिक्री क्या होती है, एक हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होता है जो मैमिक कर रहा होता है, जो कॉपी कर रहा होता है, दूसरा ऑर्गेनिजम्स होता है मॉडल जिसकी कॉपी हो रही होती है. मतलब यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, ये मैमिक करते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स, बटरफ्लाई, कोरल्स, स्नेक्स, ये सभी एक दूसरे से मैमिक कर रहे होते हैं एक दूसरे को ताकि प्रीडेटर से बच सके. तो ये जो होती है ना, ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होती है, ये एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस होती है. मतलब ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अनरिलेटेड होते हैं ऑर्गेनिजम्स, बट वहाँ पे वो एट द स्पॉट वो जो होते हैं ना, वो कोलरेशंस शो करके प्रीडेटर से बच सकते हैं. तो ये एक मिमिक्री की टाइप्स है. इसकी दो टाइप्स है मिमिक्री की. तो मिमिक्री की दो टाइप्स हैं, बैट्सन मिमिक्री और मोलेरियन मिमिक्री. जो बैट्सन मिमिक्री है इसमें क्या होता है, ये जो होती है ना, ये पैलेटेबल होती है, अनप्रोटेक्टेड बट द गेन फ्रॉम बीइंग मिस्टेकन फॉर द मॉडल्स विच इज़ द unpalatables are protected. Here you will understand by the examples of pattern mimicry as here too you can see there are the two butterflies. One name is that of the Vicori butterfly. The second is that of the monarchy butterfly. The Vicori butterfly is also called mimic or palatable species. Palatable species means harmless species. Here it can also be eaten by the predators. One predator attack on this species, it can also be eaten. But on the other hand, there is a monarchy butterfly. This is a model. Mimic, I will tell you about mimic animals, that animals are organisms which copy of another organisms. This is known as mimic. And the model species is another species which represented as a model which is being copied by another organism. This is known as a models. And the model is always harmful, distasteful और unpalatable species होती है. तो यहाँ पे वो जो विकोरी बटरफ्लाई है जो मोनार्की को कॉपी कर रही है. तो विकोरी जो होती है ना, वो मैमिक है, और जिसको कॉपी वो कर रही है मोनार्की को, वो मॉडल है. तो ये करती ही क्यों कॉपी है, ये इसलिए करती है क्योंकि ये जैसे ही इस पर प्रीडेटर अटैक करता है तो ये पैलेटेबल होती है, ये इजीली ईट कर लेता है इसको. लेकिन जैसे ही उसको मैमिक करेगी, मतलब उसको कॉपी कर लेगी, डिस्टेस्टफुल को, अनप्रोटेक्टेबल को, जिसे खाया नहीं जा सकता, तो ये बच जाएगी ना प्रीडेटर से. तो इसलिए ये बैट्सन मिमिक्री होती है, ये इस वजह से उसे कॉपी करती है ताकि वो उससे बच. मिमिक जो होती है ना, मिमिक्री इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिंग कोलरेशंस that nicely demonstration the power of the natural selections and organisms that commonly occur in communities. Along with the poisonuses or the distasteful species can benefit from the resemblance to warmly closely related species. Even though the mimic itself is non-poisonous are quite palatable because the predators have the experiences, contacts with the models and species and learn to avoid it.
Therefore, the mistakes the mimic species for the models and avoid it as well. Such false warning coloration is termed as a Batson mimicry after its discovery. Next is that many species of the harmless as the snakes, poisonous snakes is the Central Africa. Some harmless snakes are the similar to the poisonous collars snakes. Only the expert can distinguish the mimic for the models, as a few expert has been died as a result of the superficial misidentifications. Similar certain harmless flies, cloyings, moths, mimic bees, webs, palatable species of the butterfly mimic and the display. Here you can see that astrons coral snakes, ये जो होता है ना पॉइजनस होता है, और स्कारलेट किंग स्नेक नॉन पॉइजनस होता है. यहाँ पे ये जो होता है ना, जो नॉन पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस वाले को कॉपी करेगा, ये मैमिक होगा और ये मॉडल होगा. तो जो पॉइजनस होगा वो मॉडल होगा, जो नॉन पॉइजनस होगा वो मैमिक करेगा. मैमिक मीन्स टू कॉपी ऑफ एन अदर्स दैट इज पॉइजनस आर अनपेलेटेबल्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रीडेटर्स. therefore the predators learn that it is harmful. तो जो प्रीडेटर होता है वो अवॉइड करता है हार्मफुल स्पीशीज के ऊपर अटैक करने से, तो इस तरह ये बच जाते हैं. तो ये वेस्टर्न मिमिक्री के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट इज दैट ऑफ द वेस्टर्न मिमिक्री के डिसएडवांटेजेस क्या हैं. तो ये मॉडल स्पीशीज जो होती है ना, बिकॉज सम प्रीडेटर्स विल इनकाउंटर द पैलेटेबल्स आर द हार्मलेस मैमिक्स, देयरफॉर take the longer to learn to avoid the models. The greater the productions of the mimic to models, the longer is the time required for the predators. Learning greater the numbers of the models. Casualties, in fact, the mimics becomes most abundant models. Predators might have learned to avoid the prey items at all, but might actively search out models and mimic alike. For this reason, bats and mimicry are usually much less abundant than that of their models, but also mimic of these sorts are frequently polymorphic होती है. मीन्स ओनली फ्यू एनिमल्स जो होते हैं ना, इसकी फ्यू फीमेल्स जो होती हैं ना, वही मैमिक करते हैं. And the mimic several different model species. Next is that of the Mullerian mimicries. Mullerian mimicries, here two protected model species also converge because of the advantages of being eaten from each others. And the Mullerian mimicry जो होती है ना, वो different होती है और अक्कर होती है two species में. बोथ डिस्टेस्टफुल होती है, डेंजरस होती हैं. मैमिक वन ईच अदर, एक दूसरे को कॉपी कर रही होती हैं. लाइक हमारे पास एग्जांपल्स है बीज और वेब्स जो होती हैं. तो ये जो होते हैं इनको हैंडेड किया जाता है. एक येलो कलर की होती है, एक ब्लैक कलर की होती है. तो जैसे ही पोटेंशियल प्रीडेटर जो होता है ना, इनकाउंटर करता है बोथ स्पीशीज़ पर, तो जो मुलेरियन मिमिक्स होते हैं ना, वो फ्रीक्वेंटली एंड एडजस्टेड सिंगल स्पीशीज़ इस तरह नज़र आती है जैसे वो एक सिंगल स्पीशीज़ है. They learn to avoid them faster and relationship is actually beneficial to both prey species. लाइक यहाँ पे आप दे सकते हैं कि ये जो बैट्सन मिमिक्री है ना, मुलेरियन मिमिक्री, यहाँ पे दो कलर की वेब्स और बीज. एक वेब्स बीज जो होती है ना वो येलो कलर की होती हैं, और वेब्स जो होती है ना वो ब्लैक कलर की होती हैं. जैसे ही प्रीडेटर इन पर अटैक कर देता है, तो जो वेब्स है वो बीज का कलर ले लेती है और बीज वेब्स का. तो जो प्रीडेटर है उसे समझ नहीं आती बीज कौन सी है और वेब्स कौन सी है, तो इस तरह ये दोनों बच जाती हैं. और जो प्रीडेटर है वो अवॉइड कर देता है, वो छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि ये हार्मफुल एनिमल्स हैं, ये पैलेटेबल है, ये अनपैलेटेबल है और अनप्रोटेक्टेड है, डिस्टेस्टफुल है. नेक्स्ट, मुलेरियन मिमिक्री इज़ बेनिफिशियल टू ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द प्रीडेटर्स. ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, प्रीडेटर्स के लिए भी, मैमिक इक्वली, जो मैमिक कर रहे होते हैं उनके लिए इक्वली कॉमन है. एंड रियली पॉलीमार्फिक, ये पॉलीमार्फिक बहुत कम होती है, बट बैट्स एंड मिमिक्री जो ज़्यादातर होती है वो पॉलीमार्फिक होती है. दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक.